हेलो, क्या लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर हम मैथमेटिकल लॉजिक करेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक वन ऑफ वेरी इजी चैप्टर, इजी टॉपिक रादर, और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, लेट्स बिगिन विथ मैथमेटिकल लॉजिक। स्टार्ट विथ उसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इफ आई सी द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इन द इंट्रोडक्शन, लॉजिक कहाँ है? मैथमेटिकल लॉजिक का इंट्रोडक्शन। Various types of statements: negation, pure Q, yeah, P और Q दिया है यहाँ पे. Then there is P and Q. P implies Q, P if and only if Q, etc. etc. De Morgan's laws, various laws are also given there. ठीक है. और फिर यहाँ पर उसका क्लास वर्क, होमवर्क हम देख लेते हैं. एंड लेट्स बिगिन विद दैट. लेट्स स्टार्ट. बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, बहुत ही इजी. So let me start with that. The sky is cloudy. P says the sky is cloudy. Can you see that? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? P says the sky is cloudy and Q says it will be raining. Then the symbolic statement P and negation Q. The sky is cloudy and it is not raining. क्या है आंसर? The sky is cloudy and it is not raining. It will not be raining. Is this okay? Yeah. The sky is cloudy and it will not be raining. तो ये उसका आंसर होगा. C is the answer. Is this okay? Next question. Raju is tall. P says Raju is tall. Q says Raju is intelligent. Then negation P or Q. Raju is not tall or he is intelligent. Raju is not tall or he is intelligent. A is the answer. और चाहिए. अगला क्वेश्चन. The sky is cloudy and it will be raining. Negation P implies Q. The sky, if the sky is not cloudy, then it will be raining. If the sky is not cloudy, then it will be raining. So B is the answer. Right now? Isn't it? अगला क्वेश्चन. समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? The question paper is easy. We will pass. Negation P implies negation Q. If the question paper is not easy, then we will not pass. If the question paper is not easy, then we shall not pass. It's okay? Next question. Question number 5. Well, it says P is an even number. P says 2 is an even number, 2 is the prime number, and R says 2 plus 2 is 2 square. The symbolic statement P implies Q or R. Means if 2 is an even number, then 2 is a prime number or 2 plus 2. So B is the answer. Correct? Right? Agla question. P says the match will be cancelled. Q says it rains. क्या बोलेंगे? Then P if and only if Q. The match will be cancelled if and only if it rains. D is the answer. Correct है? Isn't it? 7th question. बहुत सिंपल है ये, बहुत फटाफट हो जाता है. 7. P says price increases. Q says demand falls. The symbolic statement of if the demand does not fall, then so this is negation Q implies negation P. Negation P implies negation P. C is the answer there. Is this okay? अब उल्टा दिया है यहाँ पे. पहले आपको
ये दिया जाता था, अब स्टेटमेंट्स दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, बोलिए। इट सेज द स्काई इज क्लाउडी। P says the sky is cloudy and Q says it will be raining. The symbolic statement for the symbolic statement, question number 8 ना, ये तो कहाँ रह गया भाई। हाँ, the sky is cloudy if and only if the sky is cloudy and it will not be raining. So P if and only if P and negation Q. So C is the answer. Correct ना, बराबर है क्या? Next question number 9. Kiran passed the examination. Kiran is sad. It is not true that negation. It is not true that क्या दिया, negation of Kiran passed P. Therefore he is sad. Therefore का क्या होगा? Therefore implies he is sad. Q. What is the answer here? B. Is that clear? समझे? Next question. Let there be two propositions. P. I take only bread for breakfast. I do not take anything for breakfast. Then the compound statement, I take only bread for breakfast or I do not take anything. I take only bread, P, or Q, I do not take anything, P or Q. C is the answer. Is this okay? Is that clear? Are you all understanding that? सब समझ में आ रहा है? A quadrilateral is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram. If and only if, P is this and Q says the opposite sides are parallel. क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पे? The quadrilateral is a parallelogram if and only if. So P, if and only if Q. बहुत सिंपल है, बराबर है ना? Very easy. We'll go for the next question. P and Q are two statements, then the conjunctive statement P and Q is true only when. Answer. Come on. हाँ, both are true. P and Q is true only when both are true ना? क्या तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई? नींद आ रही है तो खड़े रहो, साड़ा। अगला क्वेश्चन 13. P and Q are two statements, then the disjunction P or Q is false when both are false. When both are false. सही है ना? करेक्ट है? इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं यार, they do. क्योंकि हाउ मतलब ये टॉपिक ही इजी है रे। हाँ हाँ हाँ, एनी चैप्टर, एनी चैप्टर, हाँ एनी चैप्टर. It can be anything. It can be binomial theorem also. Star or double star. Star double star. हाँ हाँ, क्या क्या क्या? हाँ
बराबर है ना, वही तो, दैट्स व्हाट। अरे ते कसं असतं, यू हैव टू डू दिस प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली, यू कांट टेक हाँ मैं इसके बाद ये करूंगा, इतना आपको 10वीं के हिसाब से आप प्लानिंग इसका नहीं कर सकते। आपके पास 10वीं का मैं सिलेबस अगर आप लोग का देखूँ ना, 15 दिन में 10वीं का पूरा सिलेबस पूरा होता है, एंड देन यू गॉट हेल लॉट ऑफ टाइम टू यू नो, हाँ आई विल फिनिश दिस, देन आई विल डू दिस, देन 12th में 11th में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डू मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली, यू हैव टू मल्टीटास्कर हियर। अपने नोट्स के स्टार क्वेश्चंस, मैं कहाँ में बाहर जाने की बात कर रहा हूँ। हैवंट आई गिवन यू स्टार, हाफ स्टार, नो स्टार, तो बस उतना ही HSC का टेक्स्ट बुक कर लो सॉल्ट के साथ, सॉल्ट के साथ, समझे क्या? अपने नोट्स कर लो, तुमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तुमको उस दिन भी वही आंसर था और आज भी मेरा वही आंसर है। चलिए लेट्स कंटिन्यू। P and Q are two statements. Yeah, if P and Q are two statements, P implies Q is false. चलिए मुझे बताइए जरा P and Q का। P Q, P implies Q क्या होता है भाई? True true, true false, false true and false false। ये कब false होता है वो बताइए मुझे बस। True implies false is false और बाकी सब ट्रू है। ओके, तो दिस इज फॉल्स व्हेन P is false, P is true and Q is false. So what is the answer here? C is the answer. समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इज C। नेक्स्ट बताइए, P if and only if Q कैसे करेंगे? P Q, P if and only if Q, true true, true false, false true and false false। क्या होता है बताइए? कब होता है ये ट्रू? ना आप कुछ अलग बोल रहे थे, चुप कर। हाँ, नाउ दिस इज ट्रू व्हेन आइदर बोथ आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स। सी बोला तुमने, वेरी गुड। तो ऐसे यहाँ तक लाओ, साउंड वेव के माध्यम से मेरे गाने तक पहुँच जाएगी। False implies false, false implies false is true ना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो ये इसका आंसर सही है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है बोलो ना। PQR are the statements with truth values TFF. Then this is क्या लिखूंगा इसको मैं? R is false or P is true implies Q is false. This is true or false? It's true if and only if false it's false. अभी अभी डबल इम्प्लाइज का ये टेबल है, दोनों ट्रू पे ट्रू है और दोनों फॉल्स पे ट्रू है, बाकी फॉल्स होता है। इम्प्लाइज का यहाँ पे है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स इज फॉल्स। आपका फॉर्मूला पे सामने रखो ना, कि नहीं है? ओपन करके रखो, है क्या? अच्छा, डू यू रिवाइज दिस इन फॉर्मूला? नहीं, निग्लेक्टेड है, दिस इज निग्लेक्टेड। मुझे पता है ये निग्लेक्ट होता है और
यही होता है कि मतलब ये एंड और का जमता है, लेकिन इफ एंड ओनली एंड इफ देन का जो होता है ना, उसमें आपके ये होते हैं कई बार, मतलब गलत होने का चांस होता है। चलिए आगे बढ़ते। सो व्हाट इज द आंसर हियर? फॉल्स इज द आंसर हियर। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 फॉल्स। समझे? ठीक है ना? आपको चाहिए तो वो वाला पेस्ट कर दूं यहाँ पे, कुछ जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने वो उसका आपको पहले ही बता दिया। इफ द स्टेटमेंट दिस आर टू द वैल्यूज, दिस इज क्यू is false implies negation of p implies true. Now this is equal to क्या आएगा? False implies, this is false implies true. False implies true क्या होता है? False implies true. False implies false. तुम फॉर्मूला पेज ओपन करो, डोंट इरिटेट मी, डोंट गिव मी द सिली आंसर्स। तुम्हारे दिमाग में रेडी होना चाहिए। नहीं है क्या तुम्हारे फॉर्मूला पेज इसके? तो ओपन करके रखो। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू क्या आता है? तुमने बोला वो सही है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, तो द आंसर इज ए। ओपन रखो, सामने रखो। हाँ, तो द आंसर इज ट्रू। इज दिस ओके? सामने रखो। डोंट गिव me the answers. Don't sit idle because the answers are going wrong. Don't sit idle. I don't want anybody sitting idly. The condition P and Q implies P is. टेबल बनाना पड़ेगा अभी मेरे को यहाँ पर। चलिए मैं टेबल बना लेता हूँ। P Q, P and Q, and P and Q implies P. तो उसके लिए मुझे ना यहाँ पर और एक बार P लिखना पड़ेगा। और ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स, एंड ट्रू false false false. This is true true false and false. True implies true is true, false implies true is true, false implies false is true, and false implies false is true. Is this okay? A is the answer there ना? सही है। अगला क्वेश्चन that was 19. Next, one more of the same time. चलिए बताइए। P Q, P implies Q, negation P, negation Q, negation P or negation Q. Let me call this as A. So this is negation of A. बराबर है क्या? नहीं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं बोलूंगा negation of P implies Q. Let me call this as A, and this is B. So this is A implies B. मतलब ये फाइनल है ना? Negation of P implies Q implies negation P or negation Q. समझे क्या? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। आगे बताइए। P implies Q. True, true implies false is false. This is true and this is true. इसका negation false, true, false and false. Negation P false, false, true, true, false, true, false, true.
ORing of these two. False, true, true, true. A implies B. False implies false. False implies false. True, 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 and true. So this is a tautology. This is a tautology. ठीक है? Next question. आगे बढ़ते हैं. The preposition this is. Hello, table. P Q P and Q. अच्छा, एक काम करो ना, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट था ना, उसका ड्यूअल है ये. यहाँ पे जो स्टेटमेंट था ना, ये नहीं, ड्यूअल नहीं है उसमें. कोई बात नहीं. P and Q, negation of P and Q, negation P, negation Q, negation P or negation Q. Let me call this as A and this is B. Finally होगा A if and only if B. Is this okay? समझे क्या? Start. True, 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 false, false, true, false, false. तो क्या आएगा? True, false, false, false. And है ना? False, true, true, true. सही है? Negation P. False, false, true, true. And this is false, true. ORing of these two. False. This is true. True. अब मुझे A implies A if and only if B चाहिए. कब होता है वो ट्रू? जब दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स. एक ट्रू एक फॉल्स पे वो क्या होता है? फॉल्स. इफ एंड ओनली इफ. बराबर है क्या? चेक करो. तो दिस इज ट्रू. ट्रू, ट्रू, ट्रू. So this is a tautology. Is this okay? Any doubts? Next. PQR is false. मुझे एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. पहले ट्रू ट्रू ट्रू. तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और ट्रू. क्या आएगा? ट्रू इम्प्लाइज ट्रू. ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू. लेकिन ये तो फॉल्स होना चाहिए. दूसरा, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स or false. False implies false. What is false implies false? True. Correct now? Tisra C. So this is not the answer. False implies true or true. False implies true. But false implies true is true. तीनों आंसर नहीं है. D has to be the answer. True implies false or false. If false or false is false. Correct now? And true implies false is false. That's the answer. Is that okay? अच्छा है. अगला क्वेश्चन. तो बताइए. How's that? I'll drink water. Tell me. Okay. Sure.
अच्छा, I will open this first of all. This will become P or Q. P और Q का टेबल क्या होता है? नहीं बनाओ ना, टेबल बनाओ, नहीं बना दो टेबल. ट्रू 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 एंड फॉल्स. व्हाट इज द फाइनल आंसर? सी. इसलिए देखने का उसको आराम से, हाँ थोड़ा दिमाग लगा के देखो ना उसको. मैंने जानबूझ के थोड़ा ब्रेक लिया कि आप लोग पढ़ के बताओगे हाँ ये तो ये है. मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि भाई सीईटी में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लिटिल, जस्ट बी कॉन्शियस. तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अलर्ट रखो बस, उतना काफी होता है. येड़े के जैसे मत करो, बार बार वही बता रहा हूँ. कीप योर सेंसेस अलर्ट. अगर आपको स्लीपी फील हो, स्टैंड अप, ट्राई टू आंसर. डोंट बी स्लगिश इन योर थिंकिंग ऑल्सो. ट्रूथ टेबल. Truth table for the statement this, the last column has the truth value in the following order. बोलिए क्या करेंगे उसमें? Do you think we have to make the table here? This is negation P or Q and negation P and negation Q. Can I say that this is equal to negation P or Q? I'll take negation common. P or Q. Can I say so? कुछ नहीं, बना लेते टेबल, बना ले. P कितने लगेंगे आपको ये? P Q negation P Q negation P or Q negation P and negation P. And let me call this as A, this is B, A and B. ठीक है ना? True true, true false, false true, false false, false false, true true, false true, false true. ये क्या आएगा? नेगेशन P और Q, इन दोनों का ऑरिंग चाहिए मुझे. दिस इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट आई वांट द ऑरिंग ऑफ दिस, एंडिंग ऑफ दिस टू. So this is false 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 and true. I want ending of these two, false 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 and false. So what is the final answer? D. Is this okay? All right, next question number 25. The converse of the statement. Converse क्या होता है जी? converse, yes, converse क्या होता है? कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट P implies Q का कॉन्वर्स क्या होता है? Q implies P. कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? सॉरी, एंड इनवर्स क्या होता है? आर यू श्योर? तो इसका कॉन्वर्स क्या होगा? इट इज अ हॉलीडे. इफ इट इज अ हॉलीडे देन इट इज अ संडे. सो द आंसर इज
ए ना, इफ इट इज हॉलीडे देन इट इज संडे। और यहाँ पर आपको ये चीजें भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। इसका इनवर्स क्या होगा? बराबर है ना? इफ x is not 0 then we can divide by x, so C is the answer, right now? Are you understanding that? अगला क्वेश्चन, the contrapositive of the statement, this is P. If the teacher is present then the students run away. कॉन्ट्रापॉजिटिव चाहिए मुझे। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है? नेगेशन Q implies negation Q. If the students do not run away then the teacher is not present, correct? So what is the answer here? B ना, if the students are not, नहीं, do not चाहिए ना, then the teacher is not present. Is this okay? समझे क्या? Next question. The contrapositive of the statement, I do not score good marks. If I do not score good marks, P is this, then I cannot go for engineering. इसका contrapositive चाहिए। contrapositive क्या होता है? Negation Q implies negation P, सही? If I go for engineering, if I can go for engineering, then I score good marks. नेगेशन क्यों चाहिए ना, कैनॉट का कैन हो जाएगा। इफ आई गो फॉर, हाँ, इफ आई गो फॉर इंजीनियरिंग देन आई सिक्योर गुड मार्क्स, सो बी इज द आंसर। इज दिस ओके? समझे क्या? फीलिंग स्लिपी? अच्छी बोलो। 29 come on, can I take P common? ले लो P कॉमन, क्या आएगा बताओ? P एंड ब्रैकेट में आएगा Q और R, समझे क्या? एंड दैट्स द आंसर। हाँ क्या? हाँ, इसमें से एक आधी आएगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक या दो, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन कुछ भी आ सकता है ना, मतलब ये नहीं बोल सकते और एक ही आएगा तो इसको नहीं करने का। नेक्स्ट, चलो 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 आगे बढ़ो। यहां से मैं R कॉमन ले लूंगा भाई। P और Q and R, so C is the answer, correct? नेक्स्ट 31st, बोलिए। नेगेशन, मुझे ये बताइए व्हाट इज P? P इम्प्लाइज Q क्या होता है? व्हाट इज P इम्प्लाइज Q? नेगेशन P और Q। एक सेकेंड, P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला ये है क्या? तो इसका नेगेशन आएगा P एंड नेगेशन Q, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? लेकिन आपको ये एज ए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। आई होप यू नो दैट। नेक्स्ट 32nd, the logical equivalent proposition for P if and only if Q. P if and only if Q क्या होता है रे? Thank you for silence. It means P implies Q and Q implies P, सही है? That's the answer. But it also can be written as, because what is P implies Q? P implies Q is negation P और Q, तो यहाँ पर वो negation P और Q and negation Q और P ऐसा भी लिख सकते हैं, समझे क्या? तो it can be like this also. बंद कर दो खिड़की एंड दरवाजा, ये दोनों तीनों
दोनों खिड़कियां एंड दरवाजा, प्लीज, बहुत आवाज आ रहा है। दिस इज द नेक्स्ट वन, प्लीज क्लोज द विंडोज एज वेल, at least the next half an hour will not get any kind of disturbance. Yes, चलिए बोलिए। negation P और negation Q is logically equivalent to negation P। देखिए what is P implies Q is equivalent to negation P और Q, सही है। तो उस रास्ते पे what will be negation P or negation Q is logically equivalent to P implies negation Q. Can I say so? देखो ना, यहाँ पर अगर P है तो उसका negation और Q as it is, यहाँ पर P है तो उसका negation and negation Q as it is. So is it C is the answer? Hello, correct है? समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। The next one. Negation of negation is logically equivalent to. Now what I'll write here for this, पहले उस negation को वैसे ही रखो, because I know that what is P implies Q, negation P और Q, सही है। तो यहाँ पर negation P का negation, so it will be P और Q, ऐसा आएगा। अब इसको बाहर अंदर भेजिए, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, सही है कि नहीं है? तो व्हाट इज आंसर हियर? डी। जल्दबाजी मत करो भाई, हेस्ट इज वेस्ट, सही है। फॉर्मूला लिखो रे। कई बार क्या होता है, हम शॉर्टकट के चक्कर में अपने आप पैर के अंदर पैर फंस के गिर जाते हैं। बताइए व्हाट इज दिस। अब देखिए पहले तो हम इसको P if and only if Q को लिखते हैं। What is P if and only if Q? It is P implies Q and Q implies P, but that is equal to negation P or Q and negation Q और P। अब अगर मुझे इसका negation चाहिए तो वो negation इधर भी आएगा, नहीं ऐसा इधर आएगा ये नेगेशन, है ना, करेक्ट। और वो नेगेशन हर एक ब्रैकेट के लिए जाएगा। तो इट इज नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, नेगेशन P और Q। इस एंड का और होगा नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, तो जस्ट सेंड दिस इनसाइड, दिस विल बिकम P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। तो C इज द आंसर, ठीक है ना। यहाँ से भी एक्चुअली यहाँ से आप बोल सकते हैं कि भाई इतना शॉर्टकट तो होगा। हाँ, माइंड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि कई बार क्या होता है कि मेरा प्रोसेसर स्लो है ना थोड़ा सा, तो नेगेशन P और Q इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा? 36। पता नहीं क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बताओ इज इक्वल टू बोलो, कैन आई टेक, अच्छा इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करे क्या? इस ब्रैकेट को ओपन करो, दिस नेगेशन P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। आगे बोलो, कैन आई टेक नेगेशन P कॉमन? लिया, आगे बोलो, एंड नेगेशन Q और Q, सही है। नाउ व्हाट इज Q और Q? Q और नेगेशन Q इज ऑलवेज ट्रू, करेक्ट। तो ये ट्रू होगा, नेगेशन P एंड ट्रू। अब मुझे नहीं पता आप लोग ये वाले फॉर्मूले करते हो कि नहीं, ये वाले
ए फॉर्मूले में डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है, करना है तो करना है। डिफिकल्ट तुम कर रहे हो क्या, साल भर किया तो डिफिकल्ट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है साल भर करने के बाद डिफिकल्ट। सो व्हाट इज पी एंड ट्रू, पी एंड ट्रू, नहीं पी एंड ट्रू, अगर पी फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा और पी ट्रू है तो ये ट्रू आएगा। सो इट इज पी, दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी लॉ। तो यहां पर वो आएगा नेगेशन पी एंड द आंसर इज ए। इज दिस क्लियर, समझे? अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अभी जो है 4-5 वैसे ही है। स्टार्ट, टेल मी व्हाट यू डू, कम ऑन। दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे बताइए, 37। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था ना, नहीं अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा था, पता है आपको? व्हाट वाज दैट? इट सेज P implies Q एंड Q implies P, जिसका दूसरा फॉर्मेट होता है नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। यहां से बस नेगेशन कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, P एंड नेगेशन Q, एंड यहां से भी नेगेशन कॉमन लीजिएगा तो बनेगा Q एंड नेगेशन P। इज इट नॉट द सेम थिंग? सो दिस इज द आंसर। वी कैन, समझ में आ गया क्या? राइट ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी पहले मैं उल्टा पुल्टा करके लिखता, मतलब नेगेशन P एंड P और Q। नाउ यू ओपन इट, तो क्या मिलेगा, नेगेशन P एंड P और नेगेशन P एंड Q, सही है। नाउ नेगेशन P एंड P इज ट्रू और फॉल्स, बराबर है क्या? एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा और एंडिंग हमेशा फॉल्स ही आएगा। ओके, फॉल्स और दिस ब्रैकेट, तो आपने व्हाट इज P और फॉल्स, ये ट्रू है, नहीं ये ट्रू है तो ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, तो P एंड देयरफॉर द ब्रैकेट इज द आंसर, दैट इज नेगेशन P एंड Q। नेगेशन P एंड Q को अगर आप गैर से देखते हो तो सी इज द आंसर। सही है ना? इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन से नहीं, आपको जितना लगता है उतना लॉजिक भी आसान नहीं होता है, अगर ऐसे वाले आएंगे तो तुम्हारी वाट लगने वाली है कि नहीं? मतलब ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन नॉर्मल से तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं। द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इज दिस इज, मुझे इसका नेगेशन चाहिए भाई, आई वांट द नेगेशन फॉर दिस। कैसे करेंगे बताइए? दिस विल बिकम द फर्स्ट ब्रैकेट और नेगेशन ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, सही है। नाउ व्हाट इज P implies Q, नेगेशन P और Q ना, हेलो, तो इसको लिखेंगे नेगेशन ऑफ नेगेशन P और Q और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q और R, अंदर भेज दिएगा P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन R। So what is the answer here? I think B is the answer. चेक करो, है ना? समझे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। The negation of the statement. Again, मुझे इसका negation चाहिए। I want the negation for this. So let me call this as A implies B. I'll call this as A implies B. What is A implies B? Negation A और B। लेकिन अगर मुझे इसका
नेगेशन चाहिए तो ये आएगा ए एंड नेगेशन बी, सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, ए मतलब द फर्स्ट ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, सही है कि नहीं है। तो दैट इज इक्वल टू P and Q and send this negation inside P and negation R. That's the answer. So B is the answer. Is it 40? कि नहीं, नहीं, यहाँ पर और है, यहाँ पर एंड होना चाहिए, सो सी इज द आंसर, सही है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41st, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, मुझे इसका नेगेशन चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन एंड हो जाएगा एंड द नेगेशन ऑफ द सेकेंड वन, send this negation inside, this will become P or negation Q, and send this inside negation P or Q, P or negation Q and negation P or Q. B is the answer, is it? या A? P or negation Q and negation P or Q, ये सेम ही दिख रहा है मुझे। A is the answer वे, C कहाँ से आए? A is the answer. कंफ्यूज कितना किया हुआ देखो वहां पे, है ना। A is the answer here, चेक करेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट, इसको मैं हाफ स्टार बोल दूं क्या इन टर्म्स ऑफ चेकिंग ऑफ द आंसर्स, या हैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेशन ऑफ Paris is in France, P, and London is in England. इसका नेगेशन क्या आएगा? और what is the answer? B is the answer. सही है ना। Next, negation of the compound proposition. If the exam is difficult, P, then I shall pass if I study hard. What is the given statement by? Louder and clear. Given statement क्या है वो बताइए मुझे। हाँ, so symbolic form, तो इसको मैं R बोल दूंगा। इफ आई स्टडी हार्ड जो है ना इस पूरे के लिए है, इफ आई स्टडी हार्ड, तो इट इज आर इंप्लाइज पी इंप्लाइज क्यू, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। इज दैट अंडरस्टूड? हेलो, क्या ये सबको समझ में आ गया? दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, सही है ना। If the examination is difficult, then I shall pass. If I study hard, this thing is going to happen. समझ में आ गया क्या? This is very important. This is clear? समझे कि नहीं समझे? And I want the negation for this. तो मुझे इसका negation, हाँ बोलो, बोलो ना। If I study hard, then this will happen. नहीं रे बाबा, वही तो कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। That's what I'm trying to tell you. कि यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि भाई अगर मैं हार्ड स्टडी करूंगा, इफ आई स्टडी हार्ड देन दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ये है इफ दिस आर देन दिस ब्रैकेट, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट, समझे। अब मुझे उसका नेगेशन चाहिए। नो, एक चीज मुझे बताइए, what is P implies Q or A implies B for that sake? Negation A or B है? And what is negation of A implies B? A and negation B, सही है कि नहीं है? सही है ना? ओके,
नो यहाँ पर हो जाएगा आर एंड नेगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, सही है। वंस अगेन आर एंड, यहाँ पर भी वही यूज करना है, क्या करेंगे, इट इज पी एंड नेगेशन क्यू, समझे। आर का नेगेशन क्यों लिखने का, देखो ना, दिस इज ए, हाँ सेकंड स्टेप, दिस इज ए इम्प्लाइज बी है ये, तो नेगेशन ऑफ ए इम्प्लाइज बी क्या होगा, समझ में आ गया क्या। यहाँ पे लिखा है ना मैंने नेगेशन ए एंड नेगेशन, तो आर इज एज इट इज और इसका नेगेशन है, अंडरस्टूड। चलिए फिर क्या होगा, अब लिखना है इसको, आई स्टडी हार्ड। अब आपको ए एंड बी कैन बी रिटन एज बी एंड ए ऑल्सो, सो आई कैन राइट इट एज पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, क्या समझे। तो पहले P, what is P? The examination is not difficult. Okay. Sorry, the examination is difficult. The examination is difficult and I do not study hard होना चाहिए। And I, एक सेकेंड, पास वाला तो इधर है। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाँ, P and Q, so I can write it as P and negation Q and R, or I can also write it as P and R and negation Q, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझे। तो P, the examination is difficult and I study hard, the examination is difficult and I study hard and I do not pass and I shall not pass, and के जगह पर इन्होंने but दिया है, and I shall not pass, so B is the answer there। हाफ स्टार, फुल स्टार, जो बोलना है बोल सकते हो आप लोग। समझ में आ गया क्या? Did you understand that? This is not a like normal को सम की तरह नहीं है ये, it's a good sum, okay? मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉजिक में इतना हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। The negation of the statement, if a quadrilateral is a square then it is a rhombus, quadrilateral is a square P and it is a rhombus Q, मुझे चाहिए negation of P implies Q, क्या होता है वो, P and negation Q, मतलब the quadrilateral is square and it is not a rhombus, the quadrilateral is a square and it is not a rhombus, C is the answer। समझे क्या? if नहीं है ना वहां पर, if नहीं, तुम B कैसे बोल सकोगे, if then नहीं है वहां पे, and है वो, समझे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। the negation of the statement, this is P and Q, मुझे उसका क्या चाहिए, negation, तो this is negation P और negation Q, सही है। तो इसका नेगेशन क्या होगा, 10 is not greater than 5 और 2 is not greater than 7, तो उसको लिख सकते हैं 10 is less than or equal to 5, not greater than का मतलब होता है less than or equal to, और 2 is greater than or equal to 7, so what is the answer here, A is the answer। is that clear? और ही आएगा ना, एंड का और नेगेशन के और आएगा ना, सही है ना। I'll go for the next exercise now। क्या हो गया, 46 भी है क्या, और कितने हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, वेरी फ्यू, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 46, पता नहीं क्या है, द नेगेशन, the negation of the statement all students are hard working is, all का negation होता है some students, all को हम लिखते हैं some में, some students are not hard working, समझे क्या।
when we write negation. So some students are not hardworking. B is the answer. Is this clear? Next, the negation of the statement. This is P and this is Q. तो P और Q का negation चाहिए. समझे? कैसे करेंगे? नेगेशन P मतलब 5 plus 5 into 2 is not equal to 10 and 5 plus 2 is equal to 7. समझे? What's the answer? B. Any doubts? Next. The negation of the statements this is false or that is true. ये है P और this is Q. The negation of P or Q, negation P and negation Q. This is true and that is false. This is true and that is false. So C is the answer. सही है कि नहीं है? Next. ना डुएल रिड्यूस्ड, लेकिन फिर भी कर लेते हैं. ड्यूअल में क्या करना होता है? ड्यूअल में सिर्फ एंड को और से मल्टीप्लाई चेंज करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते. एंड की जगह पर और. सो दिस इज द ड्यूअल. बाकी कुछ चेंज नहीं करते. समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं. 50. The negation of the disjunction of the two statements is logically equivalent to the conjunction of their. बताइए. The negation. कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज एंड डिसजंक्शन क्या होता है? ऑफ टू स्टेटमेंट्स. इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू कंजंक्शन ऑफ देयर नेगेशंस. समझे क्या? नहीं? लेकिन अगर ये मैंने नहीं बताया होता तो कंफ्यूज हो जाते. 100% राइट ना? चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्या रिड्यूस दिस? Are you sure? 100% तो नहीं करे. तो अगले वाले सिलेबस पे चलते हैं. I mean अगला वाला होमवर्क है ना, 60 questions. 60 questions are there from the homework part. I think little less than 60 are there. I'll just check that. Little less than 60. Yeah. कितने हैं पता है क्या? 28 ही है. Only 28. 28 questions. कर ले 7 मिनट में. पता नहीं कितने होंगे, देखते हैं. What is P and Q implies P is I'll have to prepare the table. बताइए क्या करूं? PQ, P and Q, P and Q implies P. True, 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 false, false, true, and false, false. True, false, false, and false.
true implies true. क्या होता है P Q and P implies Q? ये ट्रू 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 होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिर्फ यहाँ पे फॉल्स होता है ना, ये बाकी सब जगह पे ट्रू ट्रू होता है, आई गेस करेक्ट ना. तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो यहाँ पे ट्रू इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू इज ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज ट्रू, देयरफॉर इट इज टॉटोलॉजी. समझे क्या? ओके नेक्स्ट. If this is false, the truth value of this is सेम टाइप का हो चुका है. होमवर्क ठीक है ना, सेम टाइप का हो चुका है ना, आप लोग इसको होमवर्क कर सकते हो, ठीक है ना. एक्चुअली एक होमवर्क है और एक क्लास वर्क है. हाँ सही है. नेक्स्ट. Logical statement for this is equivalent to P implies Q is negation P or Q, and this is P and negation Q. So A is the answer. सही है. The negation of the statement Ashutosh is honest P and he is rich is, इसका नेगेशन चाहिए मुझे, नेगेशन P और नेगेशन Q. सही है ना. आशुतोष इज क्या आएगा, पढ़ लीजिएगा. टेल मी द आंसर. चलिए मैं लिख लेता हूं इसका आंसर. नेगेशन P, आशुतोष is not honest or he is not rich. He is not honest or he is not rich. wait ना ठीक है ना. तो आशुतोष इज नॉट ऑनेस्ट और ही इज नॉट रिच, ये करेक्ट आंसर है. अच्छा, ही इज नॉट ऑनेस्ट और ही इज नॉट रिच, तो नाइदर नॉर का मतलब होता है कि वो ऑनेस्ट भी नहीं है एंड रिच भी नहीं है. नीदर नॉर का मतलब क्या होता है, ये भी नहीं एंड वो भी नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? What is the answer here? B is the correct answer. Is this okay? Simple English. Beginning. Negation of this is. इसका negation चाहिए भाई मेरे को. This is P and negation of bracket. आएगा ना? If I'll say negation of P implies this bracket, it is P and negation of this bracket. सही है? So that is equal to P and negation Q or negation R. What is the answer here? D.